Hello, my dear students. Once again, I welcome you all. This is our lecture number 18 in Mechanics of Solid subject, and still we are seeing Unit 1. Today we will see the topic numerical problem on Euler's formula. My name is Sudhir Kumar, a lecturer in Mechanical Engineering from James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. So let's see few problem based on Euler's theory. Understand? So we will use Euler's formula and we will use end condition of many columns, such as if both ends will be hinged, or one end is fixed and other is free, or both ends fixed, or one end is fixed and other is hinged. So these are the many conditions, or these are the end condition of column. So based on this theory or based on this condition, we are going to solve few numerical problems. So let's see our problem number 1. I will write for you problem number 1. It is very easy, my dear students. Suppose that this is our question number 1. Question number 1. First we will see our questions. Our question says that a solid round bar, a solid round bar 3 meter long, 3 meter long and 5 centimeter in diameter, and 5 centimeter in diameter. यदि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब होगा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम पहली बार आप लोग के सामने डिजिटल पैड पे न्यूमेरिकल को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब कि धैर्य रखिए, धीरे धीरे मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो जाएगा। विश्वास करते हैं जैसा आपको अच्छा से पढ़ा रहे हैं, लगन से पढ़ा, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ सॉलिड राउंड बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर is used as a strut, STRUT। यदि आप स्ट्रट ये सब नहीं जानते, कॉलम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। यूज्ड एज ए स्ट्रट विथ बोथ एंड हिंज्ड, with both ends hinged. Determine the crippling load and take E is equal to 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square, Newton per millimeter square. My dear students, listen carefully. This is our question. Actually, our question says like this: a solid round bar 3 meter long and 5 centimeter in diameter is used as a strut with both end hinged. Determine the crippling load and take E value as 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक बार हिंदी में आपको क्वेश्चन बोलेंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोलता है, एक सॉलिड हमको राउंड बार दिया गया है जो 3 मीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है, और क्या है, उसको स्टड के तौर पर यूज किया गया। यदि उसका दोनों इंड, जो इंड कंडीशन क्या है, हिंज्ड है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंड कंडीशन बहुत ही मायने रखता है, फिक्स्ड है, हिंज्ड है, फ्री है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इस क्वेश्चन के अनुसार बोथ इंड्स हिंज्ड है, तो हमको क्या फाइंड करना है,
डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। हमको क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है, क्रिपलिंग लोड बोलिए, कोलैप्सिंग लोड बोलिए, हमको वही चीज फाइंड करना है। और ई का वैल्यू हमको कितना दिया है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। So as we do, first we will write our given data. Given data जैसा हम लोग करते आए हैं, सबसे पहले अपना गिवन डेटा लिखेंगे कि गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है। तो गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है, लेंथ हमको दिया गया, लेंथ ऑफ द बार दिया गया कितना, 3 मीटर। L = हमको कितना दिया गया है, 3 मीटर। चलिए इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं सब वैल्यू को। 3 मीटर = 3000 मिलीमीटर। और हमको क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया। डायमीटर आपको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। Diameter is given as 5 centimeter. So 5 centimeter we will convert into millimeter, then it will become 50 millimeter. And now what are the values are given? E, the value of E is given. Young's modulus value 2 × 10⁵ Newton per millimeter square. Okay. Then then one more thing is given, end condition is given. End condition, column condition is given, or we can say as strut condition is given. So in this question a strut condition is given. What is the condition? Both ends hinged. Both ends hinged. इस क्वेश्चन हमको दिया गया है क्या, उसका जो दोनों एंड है, किनारा है, वो हिंज्ड है, हिंज्ड टाइप का सपोर्ट, उसके लिए हमको फार्मूला को इस्तेमाल करना। ये सारा चीज हमको क्या किया, क्वेश्चन में दिया गया है। These are the data are given in our questions. So according to this data we have to solve numerical problem. Understand? Now we are going to see the solution. Okay, let's start the solution. First of all, we have to know what are the formula for crippling load if both ends will be hinged. First of all, we should know the formula for both ends hinged. So that we know that if both ends is hinged, then crippling load which is known as P will be equal to, what is the formula? Pi square E I divided by L square. Understand? Pi square E I divided by L square. Understand? This is our formula. Then हमको क्या चीज समझना है, ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज हमको ऑलरेडी हमको गिवन डेटा में दिया गया है और क्या क्या चीज नहीं है हमको पता है। हमको एल का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू हमको ऑलरेडी, हम लोग एल का वैल्यू जानते हैं, तो एल का वैल्यू हमको पता है। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया गया, लेकिन ये आई का वैल्यू हमको नहीं दिया गया। ये आई का वैल्यू हमको जानना जरूरी है। आई क्या, आपको क्या बताया, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई का वैल्यू हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सो according to our questions,
First, we will find the moment of inertia. Moment of inertia. सबसे पहले हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास अब क्या है, सारा चीज का वैल्यू हमको पता है। जैसे ऑलरेडी वी नो द वैल्यू ऑफ पाई, वी नो द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, ऑलरेडी लेंथ इज गिवन, लेंथ ऑफ स्ट्रट, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So now we are going to find the moment of inertia. So what will be the moment of inertia for a solid round bar? So moment of inertia for a solid round bar, I will be equal to pi by 64, pi by 64 d per power 4. This is the formula for moment of inertia for round bar. Understand? Pi by 64 into d per power 4. So now we will put the values. So pi divided by 64 into, what is the value of d? The value of d was given as 50 millimeter square. The value was given as, the value for d was given as 50 millimeters. So 50 to the power 4. Please put in your calculator. So if we will put in our calculator, then it will come nearby 30.68 into 10 to the power 4 millimeter power 4. समझ आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स? ये आपका क्या था, फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पाई बाई 64 डी पर पावर 4. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ में आ गया? फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फॉर्मूला है? सॉलिड राउंड बार का. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डी का वैल्यू हम लोग जैसे कि पहले जानते थे, क्वेश्चन में डी का वैल्यू दिया गया था कितना, 5 सेंटीमीटर. लेकिन हम उसको जब कन्वर्ट किए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो हमारा 50 मिलीमीटर हो गया. हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ फॉर्मूला पे हम लोगों ने पाई बाई 64 कर दिया इंटू 50 पावर 4 कर दिया. इसका तो हमारा कितना आ गया, 30.68 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर पावर 4. मिलीमीटर पावर 4 क्यों होगा? इसका यूनिट मिलीमीटर पावर 4 इसलिए क्योंकि यहाँ डी पर पावर 4 है ना, तो उसका तो पावर बढ़ जाएगा 4, इसीलिए हमारा यहाँ पे मिलीमीटर पावर 4 इसका क्या है, यूनिट है. समझ में आ गया? अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई का वैल्यू ज्ञात कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमको पता चल गया. नाउ we know the value of pi, we know the value of Young's modulus, we know the value of moment of inertia, and we know the value of L. So finally what we will do, we will substitute all the values in this formula. Finally what we are going to do, now we got all the data, all the values, understand? Now what we will do, we will put all the values in this formula. But one thing you must have to remember, the end condition. Because as I told you, according to the end condition only our formula changes. end condition के अनुसार ही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज होता है. तो आपको end condition जानना बहुत ही आवश्यक है. यदि end condition 4 जो मेरा end condition उसको आप रट लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वीडियो बनाया, उसको आप लोग याद कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है. वो आपको याद है तभी आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा. और इस टाइप का क्वेश्चंस they will always ask in your examination. So now we are going to find the crippling load for both ends are hinged. Crippling load for both ends are hinged. So this is the formula, pi square E into I divided by L square. And already we know the one more formula. What formula? If we will talk about the effective length formula, actually if we will write our formula according to effective length, then pi square EI divided by LE square. Why? Because effective length will be equal to L. Why? Because effective length
will be equal to L when both ends will be hinged. इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू जो आपका होता है वो L के बराबर ही हो जाएगा जब आपका दोनों एंड हिंज्ड है। इसीलिए देखिए हम फार्मूला क्या यूज किए हैं, यहाँ पे जो फार्मूला सेम फार्मूला, क्यों? क्योंकि L का वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगा, जो L का वैल्यू यहाँ था वही LE का वैल्यू होगा। Why? Because LE will be equal to L. Why? According to our formula, if both ends will be hinged, then the value of effective length will be equal to the length. That's why we can solve the crippling load values, or we can solve this problem of crippling load using any of this formula. We can use this formula also, we can use this formula also, we can use this formula also, or we can use this formula also. So now we are going to see solve using any of this formula. So now we will solve. So crippling load is equal to, now we are going to substitute all the values. Crippling load is equal to pi square into, what is the value of Young's modulus? 2 into 10 to the power 5. So 2 into 10 to the power 5. And then what is the I value? Moment of inertia value? 30.68 into 10 to the power 4. 30.68 into 10 to the power 4. See, this is the I value, this is the E value, and this is the pi square value. Then divided by what? L square. So what was the length? 3 meters. So if you will convert 3 meter into millimeter, then it will become 3000 millimeter, 3000 millimeter square. Because our formula says that, what is our formula? Our formula is pi square E into I divided by L square. Pi square into E. E means Young's modulus into I. I means moment of inertia divided by L square. L square is length square. So now put in your calculator. So if you will solve this data, then we will get nearby 67,288 Newton. 67,288 Newton. If you will convert this Newton into kilonewton, then it will become 67.288 kilonewton. This will be the value of crippling load. Sorry. So this will be the value for crippling load. अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड? एक बार फिर से आपको हम समझा रहे हैं शॉर्टकट में कि हमको क्या करना था। क्वेश्चंस के अनुसार आपका क्वेश्चन जो बोल रहा था, आपको क्या किया गया था? क्वेश्चन के अनुसार आपको लेंथ दिया गया था, डायमीटर दिया गया था, यंग्स मॉडुलस दिया गया था वैल्यू, और आपको क्या फाइंड करना था? आपको क्रिपलिंग लोड फाइंड करना था। एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या दिया गया था, उसका एंड कंडीशन दिया गया था। एंड कंडीशन क्या था? इफ बोथ एंड्स विल बी हिंज्ड। तो उसके अनुसार हम लोगों ने फार्मूला ये इस्तेमाल किया। क्या फार्मूला? P इक्वल टू पाई स्क्वायर E I डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। और उसी को फार्मूला पर जब हम लोगों ने डाल दिया तो हमारा वैल्यू फाइनली कितना है क्रिपलिंग लोड का? P विल बी इक्वल टू 67.288 किलोमीटर। समझ में आ गया? धन्यवाद। यदि आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से संबंधित, तो आप ये दो बुक को रेफर कर सकते हैं। जो पहला बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय डॉक्टर R.K. बंसल, धनपत राय एंड सन्स पब्लिकेशन, एंड सेकंड बुक का नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बाय R.S. कुर्मी, एस्टर्न पब्लिकेशन। So I hope you all must have got a clear concept about the topic numerical problems on Euler's formula. So in today's class we have seen only one end condition. Which one? If both ends will be hinged.
In coming days, we are going to solve more problem on another end conditions, such as if one end will be fixed, another will be free, or if both ends will be fixed, or if one ends will be fixed and another will be hinged. So soon we are going to solve problem based on another end condition of column also. So I hope आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।